हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयर स्टफ। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के प्रोसीजर के बारे में। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स क्या होता है? जब एक हस्बैंड और एक वाइफ ने आपसी सहमति से ये मान लिया हो कि उनकी मैरिज प्रोग्रेस नहीं हो रही, देन दे म्यूचुअली कंसेंट टू द डाइवोर्स दैट दे वांट टू टर्मिनेट देयर मैरिज। क्योंकि इस मैरिज में म्यूचुअल कंसेंट होता है तो इसका प्रोसेस और भी आसान होता है, दैट इज इट इज़ मच मोर ईजियर एज कम्पेयर टू अदर डाइवोर्सेस। In Hindu Marriage Act 1955, there are few provisions for dissolution of marriage, and so there are provision for mutual divorce as well. अब हम बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में जो कि सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दी गई हैं। These conditions are very important for filing a mutual divorce. The first one is दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एटलीस्ट 1 ईयर तक सेपरेटली रहना होगा। द सेकेंड वन इज both the spouses feel that they cannot live together. दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने म्यूचुअली अग्री किया है कि उनकी मैरिज कोलैप्स हो गई है। एंड द लास्ट वन, both the spouses agree to comply in jointly or mutually file the divorce. And of course, without any undue influence, bribe or fraud. There are few things to be considered by the husband and wife before filing for mutual divorce. Number one is need for alimony. And what is the total amount of alimony that is needed to be paid? Number two is the custody of child, which is very important thing to consider. Number three is the maintenance of the shared properties. After divorce, who is going to maintain what property and in how much portion is the husband or the wife going to maintain that shared property? And number four is the splitting of the properties and assets together owned by the couple. Moving on to the last part of this video, that is procedure for mutual divorce. The first step is basically filing a petition for the mutual divorce. जो husband और wife है उन्हें एक jointly petition file करना है for getting the decree of divorce. And इस petition में उन्हें वो grounds mention करने हैं जिसके कारण वो dissolve कर रहे हैं. That is, either they cannot live together, or they have mutually decided to dissolve their marriage, or they have been living separately for at least 1 year or more than 1 year, and they cannot live together. And this petition must be signed by both the parties. Moving on to the second step of this procedure, that is appearing before the court and inspection of the petition. मतलब कि आपको फैमिली कोर्ट में प्रेजेंट होना है, हस्बैंड और वाइफ को फैमिली कोर्ट में अपने लॉयर्स या काउंसिल के साथ प्रेजेंट होना है. देन द कोर्ट विल ऑब्जर्व एंड सी योर पिटिशन अलॉन्ग विद दोज डॉक्यूमेंट्स क्रिटिकली. द कोर्ट में ऑल्सो ट्राई टू रिकनसाइल योर मैरिज, एंड इफ दैट इज नॉट पॉसिबल देन दे विल प्रोसीड फर्दर. मतलब कि वो कोशिश करेंगे कि आपको वापस मैरिज में डाल दिया जाए. आप ट्राई करो और अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करो, बट अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो वो आगे प्रोसीड करेंगे. जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जब एक बार कोर्ट ने स्क्रूटनाइज कर लिया है आपकी पिटिशन को, यानी कि पार्टीज की पिटिशन को, और देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द पिटिशन, देन द कोर्ट में प्रोसीड फर्दर and ask the parties to get their statements recorded on the oath. The fourth step is the first motion is passed and a period of 6 months is given for the second motion. यानी कि जैसे ही स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं उसी समय फर्स्ट मोशन पास होने का ऑर्डर दे देता है कोर्ट. आफ्टर दिस a period of 6 months is given by the court to the parties before they can file for the second motion. यानी कि कोर्ट एक अपनी तरफ से टाइम देता है कि यू डिसाइड, सिट, सॉल्व एंड सॉल्व अदर इश्यूज लाइक एलिमनी, मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग. एंड अ मैक्सिमम ऑफ 18 months कैन बी प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट फॉर द पार्टीज फॉर फाइलिंग द सेकेंड मोशन. सो द फिफ्थ स्टेप इज सेकेंड मोशन एंड द फाइनल हियरिंग्स. यानी कि 6 महीनों के बाद या 6 months to 18 months के पीरियड के बाद जो भी कोर्ट ने अलॉट किया है पार्टीज को, उस पीरियड के बाद पार्टीज अपीयर होंगी कोर्ट में फॉर द सेकेंड मोशन. इफ पार्टीज फील दैट दे हैव फाइनली डिसाइडेड और कम टू द कंक्लूजन, वो अपीयर होंगी कोर्ट में फॉर द सेकेंड मोशन एंड फॉर द फाइनल हियरिंग्स.
सो फाइनल हियरिंग्स में क्या क्या चीज़ें होंगी? पार्टीज़ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा एंड दे विल हैव टू अपीयर. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो ये 6 मंथ्स का पीरियड होता है ये वेव ऑफ हो सकता है 2 सिनेरियोज में. जो फर्स्ट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज़ ने अपने इश्यूज सॉल्व कर लिए हैं, इश्यूज लाइक payment of alimony and the amount of alimony, custody of the child and other issues, they have settled their issues, they have solved their issues, then in that case the court can waive off that period or the remaining period and call the parties. And the second scenario can be if the court feels that the period of 6 months will only extend the sufferings of the party, then in that case as well the court can waive off the period of 6 months. Moving on to the last step of this procedure, that is डिक्री ऑफ डाइवोर्स. सो बेसिकली इस काइंड ऑफ डाइवोर्स में कंसेंट होना ज़रूरी है पार्टीज़ का, एंड जो भी डिफरेंसेस हैं वो सेटल्ड होने चाहिए. डिफरेंसेस और इश्यूज लाइक एलिमनी, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा. सो बेसिकली देयर मस्ट बी अ कंप्लीट अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ देयर मैरिज. एंड अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है जो भी एलिगेशंस उन्होंने पिटिशन में लिखा है उससे, then the court may pass a decree of divorce for dissolution of their marriage. And this decree becomes final when the court strongly feels that there is no possibility of reconciliation and cohabitation between the parties. And hence, the court orders for the dissolution of the marriage, and that becomes final. So that's all for today's video. Thank you. Do like, share and comment. Till then, adios amigos.